गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्विफ्ट। तो यूएस और यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने रशियन बैंक्स, बहुत सारी रशियन बैंक्स जो है उनको स्विफ्ट जो इंटरनेशनल आपका नेटवर्क है बैंकिंग सिस्टम के लिए, उसमें से कट कर दिया है। अब ऑफ कोर्स ये आपको पता है कि रशिया यूक्रेन की टेंशन्स चल रही हैं, तो उसमें सैंक्शंस लग रहे हैं रशिया के ऊपर। तो उनमें से जो सबसे बड़ा अभी तक जो कहा जा रहा है कि सैंक्शन है वो यही स्विफ्ट के जो नेटवर्क है उससे रशियन बैंक्स को, बहुत सारे बैंक्स को बार करना है, ये सबसे बड़ा सैंक्शन कहा जा रहा है। तो आज तक सिर्फ एक ही कंट्री को स्विफ्ट नेटवर्क से कट ऑफ किया गया है, वो है ईरान। उससे उनको ऑलमोस्ट 1/3 फॉरेन ट्रेड का नुकसान हुआ है आज तक। अब कहा जा रहा है कि रशिया को भी इससे बहुत नुकसान होने वाला है। तो पहले तो देखते हैं कि ये स्विफ्ट सिस्टम है क्या। तो स्विफ्ट का मतलब है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक ऐसा सिक्योर प्लेटफॉर्म है, बेसिकली एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें समझ लो इंडिया के बैंक से एक ये मैसेज जाता है कि ये 100,000 रुपीज़ जो हैं ये इस पर्सन ने, एक कंसर्न पर्सन ने हमारे बैंक में, आपके बैंक में, समझ लो न्यूयॉर्क में एक बैंक है, वहाँ पर जमा कराए हैं। तो बस ये स्विफ्ट क्या करेगा, स्विफ्ट समझ लो उनका, अब सिंपल भाषा में आपको समझाएं तो ये उनका व्हाट्सएप है, तो बैंक्स का, ठीक है। तो मतलब सिक्योर और ये क्रेडिबल व्हाट्सएप है उनका। तो अगर मैं यहाँ से मैसेज जाएगा बनकर कि हाँ हमारे पास 100,000 रुपीज़ जमा हो गए हैं, आप अपने वहाँ पर बैंक में शो कर दो। तो फिर ये स्विफ्ट के थ्रू ही जो है, वो मैसेजिंग के थ्रू ही जो है, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो है उसकी क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहती है। अगर ये स्विफ्ट में ना हो तो क्या होगा, आपको कॉल करके करना पड़ेगा, या फिर जो है जिसका रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल है, या फिर टेलीग्राम करना, जो है फैक्स करना पड़ेगा। तो ये सारी जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स होते हैं। इससे बेटर जो है स्विफ्ट है। आपको पता होगा IFSC कोड होता है आपका, स्विफ्ट कोड होता है। तो ये सारा इसीलिए होता है कि आपका सिक्योर जो है ट्रांजैक्शन जो है वो हो सके। बैंक्स आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ऑलमोस्ट 11,000 बैंक्स इससे कनेक्टेड हैं 200 कंट्रीज़ में। इसमें मनी तो नहीं मूव हो रही है एक्चुअली, आपको बस यहाँ से मैसेज चला गया कि हाँ हमारे पास 100,000 डॉलर्स आ गए हैं, आप वहाँ पर न्यूयॉर्क वाला जो बैंक है वहाँ पर दिखा दो उनको, या फिर अगर वो बंदा जो चाहे पर्सन चाहता है तो उसको 100,000 जो है वो डॉलर्स दे दो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पैसा आ गया है और ट्रांजैक्शन हमने कर दिया, आपके बैंक में भेज देंगे। तो ये एक तरह से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है उनका। बेल्जियम में बेस्ड है ये सोसाइटी, और इसमें बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स कंट्री, जैसे 11 इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, जैसे US, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड्स। तो ये सारे जो हैं मिलके, और ऑफ कोर्स बेल्जियम के भी सेंट्रल बैंक मिलके इसको चलाते हैं स्विफ्ट को, ठीक है। सो अब इससे इसको बाहर कर दिया गया है। तो अब रशियन बैंक्स जो है, बहुत सारे रशियन बैंक्स को एक्सक्लूड किया गया है स्विफ्ट प्लेटफॉर्म से। तो इससे होगा क्या कि उनकी फॉरेन ट्रेड हिट होगा, उनको जो है जितना भी ऑयल का या डिफेंस का जो भी पैसा आता है आपके उनके बैंकिंग सेक्टर में, तो खासकर ऑयल का और गैस का आता है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए रिसीव करना। और उनको जो है वो बाकी बैंक्स के ऊपर या फिर दूसरे फॉरेन बैंक्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी उनकी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो नाउ लेट अस द नेक्स्ट टॉपिक जो है चेरनोबिल। तो चेरनोबिल जो है, अभी आपको पता है रशियन ट्रूप्स ने, चेरनोबिल सिटी है एक एक्चुअली नॉर्दर्न यूक्रेन में, वहाँ पर जो चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट है उसको जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया है। ऑफ कोर्स कैप्चर इसलिए किया गया था क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट है। ऑफ कोर्स वहाँ पर फिसाइल मटेरियल ना हो तो कल को यूक्रेन बॉम्ब ना बना ले इस फाइट में, तो उन्होंने सबसे पहले इसको कैप्चर किया। और दूसरा ये भी रीज़न था क्योंकि चेरनोबिल जो है वो बेलारस जो है वो आपका मॉस्को के अलायंस में है, जो है बेलारस के साथ अच्छा रिलेशंस हैं रशिया के। तो बेलारस के बॉर्डर के बिल्कुल पास में है चेरनोबिल। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले इसको चेरनोबिल को कैप्चर किया ताकि वहाँ से यूक्रेन की कैपिटल को, कीव को कैप्चर करना आसान हो जाए, ठीक है। अब आपको चेरनोबिल डिज़ास्टर याद होगा, 1986 का है, वर्ल्ड का वर्स्ट न्यूक्लियर डिज़ास्टर कहा जाता है। इसमें कुछ सोवियत यूनियन के कुछ टेक्नीशियंस जो थे उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी एक सेफ्टी टेस्ट करते हुए, उससे वहाँ पर एक्सप्लोजन हुए थे। चेरनोबिल का रिएक्टर नंबर 4 जो है, और उसका कोर तो पार्शली मेल्ट डाउन हो गया था, और बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो एटमॉस्फेयर में छूट गया था। अब कहा जाता है कि जो हिरोशिमा पर जो एटॉमिक बॉम्ब गिरा था उससे 400 टाइम्स मोर रेडिएशन जो है वो चेरनोबिल डिज़ास्टर में हुआ था। अब सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने के बहुत सारे कारण हैं, उनमें चेरनोबिल डिज़ास्टर भी एक बहुत बड़ा कारण था, ठीक है। अब जो है आपको वाई क्यों रशिया ने कैप्चर किया चेरनोबिल को, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ईज़ी एक्सेस हो जाएगा आप जो है कीव के पास, कीव को कैप्चर करने का रशियन ट्रूप्स के लिए। तो बेलारस के थ्रू जो है उन्होंने आकर चेरनोबिल को कैप्चर किया, और अब आने वाले टाइम में सिर्फ 16 किलोमीटर जो है
जो है चेरनोबिल से दूर था ये, चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट, और उसके बाद उन्होंने चेरनोबिल पे को कैप्चर किया, और फिर अब वहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर जो है वो कीव रह गया था। तो अब कीव में भी वो वहाँ पर फाइट चल रही है, देखते हैं आने वाले टाइम में वो कीव जो है वो फॉल होता है या नहीं होता है। सो बट ये चेरनोबिल को कैप्चर करने का मोटिव ये था कि वो कीव के ऊपर जो है वो अटैक कर सके वहाँ से। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है वीआईपी सिक्योरिटी कवर। तो आपको पता है कि डेरा सच्चा सौदा के जो चीफ हैं गुरमीत राम रहीम, उनको जो है जेड प्लस कैटेगरी सिक्योरिटी दे दी गई है हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा। तो अब ये जनरली सिक्योरिटीज़ जो हैं ये किसी भी पोजीशन ऑफ कॉन्सिक्वेंस के लिए कोई भी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो या गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंट पर्सन हो, उसको ये सिक्योरिटी दी जाती है। तो इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर देती है तो होम मिनिस्ट्री डिसाइड करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगर स्टेट गवर्नमेंट देती है तो स्टेट गवर्नमेंट अपने आप डिसाइड करती है कि वो किसको सिक्योरिटी कवर देंगे, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरी की सिक्योरिटीज़ होती हैं, एक्स, वाई, वाई प्लस, जेड, जेड प्लस और एस पी जी। एस पी जी तो आपको पता है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए होती हैं। तो एक्स कैटेगरी में एक गनमैन मिलता है, वाई में जैसे 1 गनमैन मिलता है मोबाइल सिक्योरिटी के लिए, मतलब कहीं वो मूव हो रहा है अगर वो पर्सन, तो उसके साथ 1 गनमैन चलेगा। घर पर 1 गनमैन रहेगा, मतलब +4 ऑन रोटेशन, मतलब बार बार दिन में चेंज होते रहेंगे। तो ऐसे जो जेड प्लस मिली है उसमें 10 सिक्योरिटी पर्सोनल जो है वो हमेशा उनके साथ चलेंगे, और 2 जो है वो रेजिडेंस पे उनकी सिक्योरिटी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कोल ऑक्शन। तो आपको पता है कि जो है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि कोल जो है वो कोल कंपनी से एक ई ऑक्शन विंडो के थ्रू ही खरीदा जा सकता है अब से। तो पहले क्या होता था कि जो पावर सेक्टर की कंपनीज़ हैं वो अलग कॉन्ट्रैक्ट करती थी कोल कोल इंडिया लिमिटेड के साथ। फिर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर जैसे कि कुछ जो ट्रेडर्स थे वो कोल, अगर उन्हें कोल खरीदना है तो वो अलग से कॉन्ट्रैक्ट करते थे। तो अब एक कॉमन विंडो बना दी है, चाहे पावर कंपनी को खरीदना हो चाहे किसी और ट्रेडर को खरीदना हो, वो कॉमन ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म से जो है वो कोल कंपनीज से सरकारी जो कोल कंपनीज हैं उनसे कोल को खरीद सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि जो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं जो कोल कंपनीज के बीच में, जो इन कोल इंडिया के बीच में और पावर कंपनीज के बीच में, वो इससे अफेक्ट नहीं होंगे। क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आप कॉमन प्लेटफॉर्म बना रहे हो तो आपको कॉमन रेट देना पड़ेगा सबको। तो अब इसलिए कहा जा रहा है कि जो करंट लिंकेजेस जो हैं वो इम्पैक्ट नहीं होंगी, जो अभी तक हमने पावर कंपनीज़ के साथ एग्रीमेंट किए हैं कोल देने के लिए या नॉन पावर कंज्यूमर्स के साथ, वो इम्पैक्ट नहीं होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट वाले प्राइजेस पे ही जाएंगे। आने वाले टाइम में जो आगे जो फ्यूचर में जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉमन होगा, सबके लिए सेम रेट होगा, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि डिफ़ॉल्ट मोड होगा रेल मोड, मतलब कि जो है जो भी कंज्यूमर परचेज़ करेगा तो उसको रेल के थ्रू जो है वो कोल मिलेगा। बट अगर कोई चाहता है तो उसको बाय रोड जो है वो भी कोल लेने की सुविधा होगी। तो इसको क्यों किया गया है? क्योंकि अभी क्या होता है कि सिंगल रेट कंज्यूमर्स को देने का इसमें जो है वो ट्राई किया जा रहा है कि जब एक ही प्लेटफॉर्म से सबको आप कोल बेचोगे तो आपको सबको सेम रेट देना पड़ेगा, मार्केट डिस्टॉर्शंस नहीं होंगी, है ना। अब कई बार क्या होता है कि पावर सेक्टर को आप सस्ते में कोल दे देते हो और बाकी ट्रेडर्स को थोड़ा महंगे में कोल देते हो, तो पावर सेक्टर का कोल जो है वो कई बार ट्रेडर्स के पास आ जाता है, मतलब स्मगल होता है, स्मगलिंग होती है, ये सब चीज़ें जो है उसको रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वीवा कार्निवल। तो गोवा जो है वो एनुअल कार्निवल जो है उनका उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये जो पोर्चुगीज़ रूलर्स थे उनके टाइम से मनाया जाता है। तो ये जो मंथ ऑफ लेंट जो कि कैथलिक्स मनाते हैं उससे पहले इसको सेलिब्रेट किया जाता है गोवा में। परेड होती है, म्यूज़िक होता है, डांस होता है, ठीक है। अब ये गोवा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो है पणजी में, वो इसको जनरली सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें एक कैरेक्टर होता है जो परेड को जो है वो लीड करता है, वो है किंग मोमो। तो किंग मोमो जो है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि ग्रीक गॉड मोमस, मोमस कौन थे, जो कि गॉड ऑफ सटायर, सटायर मतलब होता है कटाक्ष, जिसको हम कह सकते हैं ना। तो अब जो है सटायर के जो गॉड हैं वो उनके कैरेक्टर से डिराइव किया गया है किंग मोमो, और वो जो जनरली जो सबसे लार्ज पर्सन होता है उन उसको जो है वो किंग मोमो का क्राउन पहनाया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है LIC डिसइन्वेस्टमेंट। तो अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि जो LIC है उसके अंदर भी 20% जो है शेयर्स जो हैं वो कोई फॉरेन इन्वेस्टर ऑटोमेटिक राउट से खरीद सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक क्या था कि हमारी इंश्योरेंस में तो हमने ऑलरेडी 74% जो है वो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक अप्रूवल राउट्स उसके लिए दे दिया है। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं था कि क्या LIC जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है उसमें जो है फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी आएंगी, कितनी आ सकती हैं ऑटोमेटिक रूट से। लेकिन तो इसके लिए क्या किया गया कि जो अभी हमारी ये पॉलिसी है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के से रिलेटेड FDI की पॉलिसी जो है, जिसमें 20% जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो अप्रूवल राउट से आ सकती है, उसके तो उसी को ही फॉलो करते हुए एक्चुअली जो है पब्लिक सेक्टर बैंक की जो है वो हमारी गवर्नमेंट अप्रूवल राउट से आती है। लेकिन
LIC के लिए जो है उसको ऑटोमेटिक अप्रूवल राउट जो है वो रखा गया है, मतलब गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, और जो है उनको डायरेक्टली वो 20% तक जो है शेयर्स LIC के खरीद सकेंगे। तो गवर्नमेंट ये क्यों कर रही है? गवर्नमेंट इसलिए कर रही है कि ये बहुत ल्यूक्रेटिव बन जाए LIC, ताकि जब उसका IPO निकले तो वो बहुत अच्छी जो है गवर्नमेंट को इसका जो है वो बेनिफिट मिले, बहुत अच्छी कैपिटल उनको मिले, ठीक है। तो जब FDI भी आएगा और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी का भी इंटरेस्ट होगा, तो LIC का जब भी IPO निकलेगा तो वो बहुत अच्छे रेट पर निकलेगा, गवर्नमेंट बहुत पैसा कमा पाएगी, ठीक है। तो हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में देखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो 1956 में जो है वो बनाई गई थी एक एक्ट के बाद। तो अब इसमें 154 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ को मर्ज करके, 16 फॉरेन कंपनीज़ को मर्ज करके, 75 प्रोविडेंट कंपनीज़ को मर्ज करके LIC को बनाया गया था। तो मतलब एक मेगा कंपनी बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो भी LIC का जो है वो मुंबई में है, महाराष्ट्र में ऑफ कोर्स। और जो है एक्चुअली ये शुरू में तो एक कॉर्पोरेट फर्म की तरह शुरू हुई थी, लेकिन बाद में जब एक्ट पास हुआ तो इसके बाद जो है बहुत सारे इसको हमने प्राइवेट इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इसके बाद जो है LIC के थ्रू ही जो है वो हमने नेशनलाइज भी कर दिया था, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ECGC। तो ECGC जो है आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, उन्होंने डिसाइड किया है कि जो शिपमेंट्स रशिया में जाती हैं उसको वो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी जो है कवरेज नहीं देंगे। अब इसमें होता क्या है कि ये ECGC जो है आपका, ये आपके इंश्योरेंस देता है, ठीक है। कि जो आपने जो एक्सपोर्टर्स हैं, समझ लो जो रशिया में एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया की तरफ से कोई एक्सपोर्टर है वो रशिया में एक्सपोर्ट करता है सामान, तो अगर उसके समझ लो बीच में डाकुओं ने, पायरेट्स ने लूट लिया, या उसने जहाँ पर सामान एक्सपोर्ट किया वहाँ से कोई पेमेंट ना आई, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो उस केस में ECGC जो है वो उसको पे करता है, क्योंकि वो इंश्योरर है ना। लेकिन अब ECGC ने कहा है कि अब हम जो है उनके जो कवरेज है शिपमेंट्स की जो रशिया में, क्योंकि रशिया और यूक्रेन में सिचुएशन शुरू आ गई है, तो ECGC को लग रहा है कि वहाँ तो बहुत सारे ऐसे जो हैं वो सिचुएशंस आ सकती हैं कि वहाँ पर जो शिपमेंट्स भेजी गई हैं वो मतलब जो है वो कोलैप्स हो जाएं, या फिर चोरी हो जाएं, या फिर खतरे में आ जाएं। तो ECGC अब जो है वहाँ पर जो है वहाँ का रिस्क नहीं उठाना चाहता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि पहले तो ऑलरेडी हमने उनको ओपन कवर कैटेगरी में रखा हुआ था रशिया को, अब उसको रिस्ट्रिक्टेड कवर कैटेगरी में डाल दिया गया है, ताकि जो है लोग जो हैं वो अपने हिसाब से इंश्योरेंस लें। कुछ जो उसमें बहुत ही कम जो है इंश्योरेंस की, एक तो वैल्यू भी बहुत कम मिलेगी, और जो बहुत कम रिस्क भी कवर होंगे, ठीक है। ओपन कवर कैटेगरी में तो बहुत लिबरलाइज्ड बेसिस पर जो है उनको कवर पॉलिसी होल्डर्स को दिया जाता है, कम रेट पर पॉलिसी मिलती है, ज़्यादा रिस्क भी कवर हो जाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अगर किसी जगह पर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो वहाँ पर जो है कंपनीज़ जो है वो कम इंश्योरेंस जो है वो थोड़ी लिबरलाइज कम कर देंगी, है ना। तो ECGC के बारे में देखते हैं। कंपनीज़ एक्ट 1957 के थ्रू इसको बनाया गया था, ताकि जो है एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके। जो भी रिस्क होते हैं, जैसे कि ओवरसीज़ बायर कोई पेमेंट ना करे, कोई पॉलिटिकल रीज़न ऐसा आ जाए, कोई वॉर जैसी सिचुएशन आ जाए, है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपके एक्सपोर्टर्स जो हैं उनका पैसा ना वहाँ पर फंस जाए, उसके लिए इंश्योरेंस कवर दी जाती है। और बैंक्स जो हैं किसी एक्सपोर्टर को लोन नहीं देते लोग, क्योंकि बैंक्स भी डरते हैं कि कल को इनका एक्सपोर्टर का पैसा ना आया वहाँ से, तो जो है हमारा पैसा डूब जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि ECGC जो है वो एक्सपोर्टर को इंश्योरेंस दे देता है और कहता है बैंक को कि चलो ठीक है, अगर इनका पैसा ना आया तो मैं आपको पे करूँगा इनका पैसा, तो आप इनको लोन दे दो, ठीक है। तो ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है ECGC, और जो है 1957 में इसको बनाया गया था। कंट्री से जितने एक्सपोर्ट होते हैं उनको क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस और अलग ऐसी सर्विसेज देने के लिए इसको बनाया गया है ना। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is SWIFT. So SWIFT is basically Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. So this is basically a secure platform through which financial institutions like our banking system operates, and they contact each other through this system. So this is like I was telling you in Hindi, that it is basically a secure WhatsApp between banks. Okay, so like if you deposit $100,000 in a Mumbai-based bank, it will send a message through this SWIFT platform to a New York-based bank where you want your money to be transferred. So this Mumbai-based bank will send message through SWIFT to that New York branch
that yes, we have received $100,000 in our account, and you can show that money in your in that target account, and if the person wants to have that money in New York, it can be transferred. Okay, so in this case, actually the money is not transferring. The bank is only saying that yes, I have received $100,000. Now you can show it in your New York based bank, and you can it can of course be the India based bank and a foreign US based bank. So this, they basically they will settle their transactions later on, but this is basically an acknowledgement of receipt of money. So basically, the banking sector operates through this secure platform. So the money is not moving, but it is basically Swift is acting as a middleman, and it is verifying that yes, this is a real transaction. Okay, so what has happened now is US and European Union have decided that they will cut off a lot of Russian banks from this Swift platform. So this is a network of for banking system to operate smoothly. So earlier there is just one country which was debarred from this from accessing this Swift system. It was Iran, and it led to about Iran losing one third of its foreign trade. So it is being said that Russia will also suffer a lot because of these sanctions, and this Swift has is based in Belgium, and it is overseen by the central banks of 11 industrialized countries like Canada, France, Germany, etc. So of course US also is also involved in it, and uh, this is of course located in Belgium. So central banks of these countries operate it, and now they have barred Russia from accessing this Swift network. Okay, so what would happen to Russia because of it? So this Russian banks would not be able to receive this or access this Swift platform, and there would be difficulty in transferring money. And you know that Russian economy is already dependent on oil and gas money, and it is dependent on exports of oil and gas, and that's why it would be very difficult for these banks to it would be difficult. I would not say that it would be impossible, but it would be very difficult for these Russian banks to get money or these so what basically the foreign investors would shy away from investing money here, because they would find it very difficult to move their money from a foreign country to Russia. Okay, so now let us see the next topic, which is Chernobyl. So Russian troops have been able to capture Chernobyl nuclear plant in northern Ukraine. So Chernobyl is actually a city which is on the borders of Belarus and Ukraine, but there is a nuclear plant there, Chernobyl nuclear plant, and it was the site of the worst nuclear disasters in human history. So why this Chernobyl is basically 16 kilometers away from the city of Chernobyl, and it is about 100 kilometers away from the Ukraine's capital city of Kiev. So this Chernobyl nuclear plant witnessed world's worst nuclear disaster in the year 1986. A group of technicians from the Soviet Union, they made a botch up attempt during a safety test, and it led to the series of explosions in Chernobyl's reactor number 4, and even the core of that reactor melted partially. So it released about uh, it released a lot of radioactive material into the atmosphere, and it is said that about 400 times of more radiation was emitted during this disaster than if we compare it with Hiroshima, the bomb that was dropped in Hiroshima. So this Chernobyl nuclear disaster was one of the many causes that led to the collapse of the Soviet Union a few years later, that is in 1991. So why Russia has captured Chernobyl? Of course, they want to capture this nuclear plant because they want to ensure that none of the rebels or none of the forces in Ukraine get access to this fissile material, and they do not develop a bomb with which they can later threaten on Moscow. So they want to capture it, and most importantly, they want to use it as a base through which they can attack the capital city of Ukraine, that is Kiev. Okay,
So now let us the next topic, which is VIP security cover. So you know that Haryana government has recently given Z plus security to Dera Sacha Sauda chief Gurmeet Ram Rahim ji. So this protection of VIP security is generally given by both the state governments as well as the central government. In case the central government is providing it, the Union Home Ministry provides that this security to a person of consequence in society or in the government. So these levels of protection are X, Y, Y plus, Z, Z plus, and SPG. SPG is meant for the Prime Minister and his immediate family. So this X category, under this X category status, one gunman is provided to the individual. Like for Y category status, one gunman is for mobile security, like that is when the person is moving or traveling, and one person is for static security, that is security at home. So in Z plus category, 10 security personnel would accompany the person, the protected person, during mobile security, and 2% would remain at the residence for security. Okay. So now let us the next topic, which is coal auctions. So Union Cabinet has given approval for offering coal by coal companies through a common window, that is the e-auction window. So currently what is happening is that these coal companies have separate contracts with let's say power companies and let's say other traders. So they are offering different amount of different prices of coal to other to these several buyers. So what the government wants to do, they do not want market distortions in this coal sector, because you know that they may be offering power sector companies a less rate than as compared to any other trader. So there is a possibility that coal smuggling would be happening. Some people may be smuggling coal from power companies to the private traders. So the government wants to eliminate all these market distortions. So they have come up with a plan that they will be offering this coal by coal companies through an e-auction window. That is, it will provide a common price for all the consumers. But government has also ensured that the existing consumers who have made contracts with these companies, they would not be affected. Their contracts and the prices which according to the contract would go as per the plan. Only the new consumers would be able to access this e-auction plan, and after these contracts would expire, these parties would also be transferred to this e-auction window. Okay. So the plan is to bring a single rate for all the consumers through this e-auction market and eliminate all such market distortions which may lead to several inaccuracies in the market. So now let us see the next topic, which is Viva Carnival. So Goa is celebrating the annual carnival from 26th February to March 1st. So this is basically being celebrated since the erstwhile Portuguese rulers of Goa, and it is celebrated before the month of Lent, which is followed by the Catholics in Goa. So during this festival, parades, music, dance, and culinary delights are offered. So Goa Department of Tourism uh, is the center of action during this carnival. So there is also a very interesting character, King Momo. So this King Momo is basically a character which is derived from the Greek god Momus. Momus is the god of satire, and the crown of King Momo is made is given to the person, or the person who is a large gentleman who is leading the carnival parade. He gets to wear this crown of King Momo. Okay. So now let us see the next topic. The next topic is LIC disinvestment. So Union Cabinet has approved changes to India's FDI policy with respect to LIC. So you know that government is coming up with LIC disinvestment, or they want to come up with an IPO in share market. So to lure foreign investors, to lure rather more investors, and to uh, make this LIC share or this IPO more attractive for investors. The government has decided that foreign investors would be able to invest in LIC shares up to 20% of LIC shares under the automatic approval route. So you know that already our insurance sector has provision that 74% of foreign investments can come up in this sector under automatic approval route, but there was no policy actually on the public sector companies or public sector insurance companies like LIC.
Okay, so at present at present FDI policy also says that public sector banks can get 20% investments, but only after government approval route. So this is a marked difference, because in LIC we are allowing 20% investment, foreign investment, through automatic approval route. Okay, so the government permission would not be required. So why the government is making it so liberal? Because they want that this IPO should be a marvelous success. When foreign investors would start investing in it, they would also wait for this IPO. So this IPO prices would be very high, and government would be able to mop up a lot of resources through this IPO. Okay, so about this Life Insurance Corporation of India, it was created in 1956 after this LIC Act was passed. So initially it was a corporate firm, and after this LIC Act was passed, it became a statutory corporation. So it was formed after merging 154 life insurance companies, 16 foreign companies, and 75 provident companies. So it was also instrumental in the nationalization of private insurance industry in India. So it is of course the largest financial institution. It is one of the largest financial institutions of India, and it is headquartered in Mumbai. Okay, so now let's see the next topic, which is ECGC. So this ECGC is basically Export Credit Guarantee Corporation. This is basically a Ministry of Commerce and Industry insurer, and this is basically an insurance company which provides export credit guarantee to the exporters who are exporting from India. So what happens is that if you are an exporter and you are sending something, or you are selling something to, let's say, UK, you may be facing a lot of risk, because your consignment can be robbed by pirates, or there could be a natural disaster, there could be political upheaval in that country where you are sending. You do not have any control over that. Okay, so to remove all these fears, this ECGC was formed by the government, and on behalf of the exporter, it tells the banks, let's say bank, in case of banks, if you want to access credit from the bank, then this ECGC would say that please give him loan. If he defaults on this loan, I would be paying you the loan amount. Okay, so what has happened now is that ECGC has put pulled out Russia from the open cover category. Under the open cover category, a more liberalized form of insurance is given to the exporters. But now, because of the emerging situation, Russia has been put under the restricted cover category, under which there would be harsher conditions for getting insurance by the exporters. So about this ECGC, it is aimed to provide non-payment risks to the overseas buyers, and due to any commercial and political reasons. Let's say, even there, if there is a natural disaster, a war, or even this could happen that the buyer who has imported products from you, that is to whom you have exported your products, that buyer can also deny, or buyer can also deny you payment. Okay, in that case also ECGC would pay you, because it would fall under the purview of insurance. Okay, so insurance protection. So this ECGC was created under the Companies Act of 1957, and it is wholly owned by the Ministry of Commerce and Industry. So it was initially set up in 1957, but later on its name was changed to Export Credit and Guarantee Corporation Limited in 1964, and later on it was changed to ECGC Limited in 2014. So the objective of this organization is to promote exports from the country by providing credit risk insurance and related services for exports. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.